So, good morning, students. So, in the last class, in exercise 12.2, I have completed question 1, and I told you that question 2 is same as question 1. तो 1 का जैसा 1 because it's a question of unbounded region, तो 2 भी unbounded का होगा. और ऐसे क्वेश्चन अनबाउंडेड का क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है. 2 है, देन 9 है एंड 10 है. तो ये 3 क्वेश्चन तुम लोग देख सकते हो लाइक 1 और होगा तो हम एक क्वेश्चन करा देगा, लेकिन बाकी ये क्वेश्चन जो है सब बाउंडेड रीजन का है, तो उसमें क्वेश्चन ज़्यादा है. तो यहाँ से हम एक दो क्वेश्चन पहले दिखाएंगे, तो क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन दिखाना मुश्किल है, एक क्वेश्चन बहुत लंबा होता है. तो क्वेश्चन 3 को हम दिखा देते हैं. क्वेश्चन 3 को हम पूरा दिखाएंगे क्योंकि इसमें तुम लोग को कैसे लास्ट में लिखना है वो भी तुमको जानना होगा. तो इसमें हमको दिया है इज अ क्वेश्चन ऑफ दैट फैक्ट्री दैट मेक्स टेनिस रैकेट्स एंड क्रिकेट बैट्स. तो इसमें हमको दिया है कि देयर आर टू टाइप ऑफ मशीन्स यूज्ड, टू टाइप ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड देयर. वन इज दैट मशीन टाइम एंड द क्राफ्टमैन्स टाइम. तो इन केस ऑफ रैकेट, टेनिस रैकेट, the machine time for one racket it needs 1.5 hours of machine time and 3 hours of craftsman's time. मतलब craftsman's time ज़्यादा लगता है. In case of cricket bat तो it takes 3 hours of machine time and 1 hour of craftsman's time. तो इसमें machine time ज़्यादा होता है, craftsman's time कम होता है. तो बोला कि in a day the factory has the ability of not more than 42 hours of machine time and 24 आवर्स ऑफ क्राफ्टमैन्स टाइम. मतलब एक दिन में मशीन टाइम 42 आवर्स से ज़्यादा नहीं होना है और क्राफ्टमैन्स टाइम 24 आवर्स से ज़्यादा नहीं होना है. दैट इज द रेस्ट्रिक्शन गिवन इन एवरी डे, पर डे. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट नंबर ऑफ रैकेट्स एंड बैट्स मस्ट बी मेड इफ द फैक्ट्री इज टू वर्क एट फुल कैपेसिटी. मतलब फुल कैपेसिटी में होगा तो कितना रैकेट्स एंड बैट्स बना सकते हैं फैक्ट्री, मतलब अंडर द रेस्ट्रिक्शंस. और उसमें बोला है कि इफ़ द प्रॉफिट फॉर टेनिस रैकेट इज़ 20 एंड बैट फॉर बैट इट इज़ 10, पर रैकेट 20 एंड पर बैट 10 रुपीज़ प्रॉफिट होता है. तो व्हाट विल बी द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट फैक्ट्री कैन मेक व्हेन इट वर्क्स एट फुल कैपेसिटी. तो नाउ आवर मेन ऑब्जेक्टिव इज़ व्हाट, टू फाइंड आउट द मैक्सिमम प्रॉफिट. मतलब प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है. So this is the main objective, and first you have to know how many rackets and bats you can make to get the maximum profit. तो इसलिए हम लोग को number of rackets and number of bats हमको नहीं पता, so that you have to assume and you have to assume the profit. So first of all, before going to the data, so first you take let x and y numbers of x and y number of tennis rackets and cricket bats. Tennis racket and cricket bats can be made if the factory works at full capacity. Actually the data दिया है, that is data for per day. Okay, and Z be the total profit. तो हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड वेरिएबल्स हम एज्यूम कर लिया, डिसीजन वेरिएबल्स. नाउ यू कैन शो द डाटा इन टेबल. देन द गिवन डाटा can be tabulated as
follows. Okay, now let me show the data. So for data you have to take better rectangle. So if you take the rectangle, तो डाटा को हम लोग जितना पॉसिबल हो सकता है उतना बनाना पड़ेगा. सो नाउ यू टू गो फॉर द स्ट्रेट लाइन्स. तो इसमें मेनली फर्स्ट रहेगा ये. उसको एक काम करना पड़ेगा. लेट मी चेंज द कलर. ओके, सो द फर्स्ट वन और दो ड्रॉ करना होगा. दिस अनदर वन, वन मोर. Okay, so one more. So there is one more. So not one, there will be 1, 2, 3 और दो लाइन ड्रॉ करना होगा. So now here you have to write a resource. So first of all resource, then there will be tennis racket. तो टेनिस रैकेट हम लोग कितना बना रहा है, x numbers. एंड क्रिकेट बैट कितना बना रहा है, y numbers. एंड इन दिस केस हम लोग को इसमें टाइम, तो जो रिसोर्स है रिसोर्स तो टाइम में सही है. तो उसमें हमको रिक्वायरमेंट मतलब हाउ मच टाइम वी नीड और अवेलेबिलिटी, हाउ मच टाइम वी हैव इन ए डे. रिक्वायरमेंट और अवेलेबिलिटी होगा इसमें ऑब्लिक दे के, सॉरी, और यू कैन राइट इज अवेलेबिलिटी. ये काम करते हैं इसको थोड़ा स्पेस. रिक्वायरमेंट, क्योंकि इन दिस केस इसमें दो तरीका आता है. कभी कभी हम लोग को दिया होता है कि दिस मच इज अवेलेबल एंड देन इट विल बी रिप्लाई, इट इंडिकेट्स अवेलेबिलिटी एंड समटाइम्स यू नीड दैट रिक्वायरमेंट. तो अभी हम लोग का अवेलेबल है कि हम लोग के पास मशीन टाइम टोटल है, तो रिसोर्स है. फर्स्ट आएगा मशीन टाइम. तो मशीन टाइम हम लोग के पास है कितना, टाइम इज गिवन इन टर्म्स ऑफ आवर एंड द क्राफ्टमैन्स टाइम. तो क्राफ्टमैन्स टाइम भी ये भी आवर में है. सो दिस इन आवर. तो ये क्लियर नहीं हो रहा है तो एक काम करते हैं इसको, लेट मी करेक्ट दिस. ये भी सेट क्लियर नहीं है. सो इन आवर, लेट मी मेक इट दिस थिंग जितना पॉसिबल होगा. सॉरी, ये भी करते हैं. तो एंड देयर द प्रॉफिट, and profit is given in rupees. So in this case you have given that for tennis racket you need 1.5 hours of machine time and 3 hours of craftsman's time. And cricket bat
you need 3 hours of machine time and 1 hour of company's time, and total available machine time in a day is 42 hours and total available company's time is 24 hours, and profit in rupees is given as rupees 20 for racket and rupees 10 for bat. So this much data is given. Now you have to formulate it mathematically. So what will be the mathematical formulation there? So for mathematical formulation, first you have to go for Z. So what is Z? Z is the total profit. So profit for one racket is 20, then X racket के लिए कितना होगा 20X rupees, and for one bet is 10. Total Y bets you have made, so total is 10Y. This is the total profit you have made, and this can be written as, if you take common 10, it will be 2X plus Y. So this is Z. This is the objective function, and then you have to from the problem you can formulate mathematically. So now you can go for the mathematical formulation. So this is the first part of the question. So first you have to write maximize Z. That is what? 10 into 2x plus y, and then subject to constraints. तो constraints आएगा हम लोग का रिसोर्स से, जो हम लोग का रेस्ट्रिक्शन दिया है रिसोर्स में कि हमें मशीन टाइम इट शुड नॉट बी मोर देन 42 आवर्स. सो टोटल मशीन टाइम कितना हो गया? फॉर वन रैकेट 1.5 आवर्स, फॉर एक्स रैकेट कितना होगा 1.5x, एंड फॉर वाई बेस इट विल बी 3y. टोटल आवर्स हो गया 1.5x प्लस 3y, एंड इट शुड नॉट बी मोर देन दिस, इट शुड बी लेस देन दिस, क्योंकि इसमें इतना ही अवेलेबल है. तो 1.5x प्लस 3y. तो फर्स्ट रेसिस्टेंस होगा 1.5x प्लस 3y इज ग्रेटर देन, सॉरी ग्रेटर देन नहीं होगा, इट शुड बी व्हाट, टोटल जो टाइम है इट शुड नॉट बी मोर देन 42 आवर्स. और इसका हम लोग थोड़ा सा अभी मॉडिफाई करेंगे, मतलब ये 1.5 को हटाएंगे तो कितना होगा, ये 3/2 है, लाइक 3/2. तो 3/2 होगा, तो यू कैन डिवाइड बाई 3 एंड मल्टीप्लाई बाई 2, मतलब मल्टीप्लाई बाई 6. सो देयर बी 3/2 मीन्स हो जाएगा 3 से डिवाइड करो और 2 से मल्टीप्लाई करो, तो x प्लस 2y, देन डिवाइड बाई 3 मतलब 2/3 से मल्टीप्लाई करना एक्चुअली. There will be 2y and there will be 28. So this is the first equation you have got, and the second equation is what? कितना होगा 3x plus y less than equal to 24. That means time 3x plus y less than equal to 24. This is the second equation, and number of rackets and number of bets never be negative, so it will be greater than equal to 0. So this is the question you have got. इसके बाद ये हो गया formulation. After that you have to solve by using graphical method as you have done before. So now let's go for the graphical method here. तो हमको एक ग्राफ ड्रॉ करना होगा, तो उसके लिए हम लोग को first you have to make it. Okay, so take this arrow, steps can be more. इसमें तो सिर्फ एरो ही है, वो नहीं होगा. I thought can have. Okay, now let it black first. So arrows हम लोग को 2 एरो सही होगा. ओ सॉरी उल्टा हो गई है. Take this arrow upward. थोड़ा सा नीचे ला सकते हैं. Then next one you take it
rightward direction. Okay, so now this is x and this is y. So now can do one more thing. You have to make these equations. और equations बनाएगा तो क्या क्या आएगा? Actually रफ पार्ट है, हम इसको दूसरा जगह में भी दिखा सकते हैं. मैं फिलहाल हम लोग यहाँ में दिखा रहे हैं. यहाँ में हम लोग दिखाएगा तो for the first equation हम लोग को क्या क्या points मिल सकता है. You just take 2 points at least to make the graph. So if you make 2 points, x plus 2y equal to 28, तो उसमें क्या आएगा? If you put x0, y 14, x0 then y is 14, and if you take y0, you will get x 28. तो फर्स्ट इक्वेशन तो हमको मिल गया. Then the second का भी निकाल लेते हैं. तो सेकेंड का निकालेंगे. So if you put y0, x8, if we put x0, y24. So first you go for the first line. So if you take it 0 14, suppose मान लेते हैं 0 14 हो गया. 0 14 ये दिखा देते हैं. 0 14. फिर नेक्स्ट पॉइंट 28 0 तो काफ़ी दूर में होगा. सो से दिस इज 28 0. 28 0. So now we have to draw a line for this. So उसके लिए हमको लाइन चाहिए. So if you take the line, तो ऐसे होगा almost. But we have to change the color. Say red. Now the equation का हम लोग लिखना होगा so that there will be no trouble after calculation. So you can take it as x plus यहाँ में ले सकते हैं हम लोग x plus 2y equal to 28. This is the line. This line is x plus 2y equal to 28. Then go for the next line 80 and 024. So 80 means somewhere here you can put, and 028 थोड़ा ऊपर जाएगा. So if you take, say this is 80, say this is 80, comma 0, and this is 024. This is 024. So this is the line, second line. So now the equation you can write anywhere. It can be, you can write here also, and the equation is 3x plus y equal to 24. So this is the equation of one line, and this is the equation of another line. So now these are the points where they intersect, but these are less than, so it will be downward. दोनों का downward होगा. So downward means you can take the common part as this. So this part will be the common part. So common part को हम लोग उस line खींच के दिखा देते हैं. We can feel that, yes.
Maybe you can fill that part. Common part is if we fill like that. Let me start by is it possible to fill up or not? So if you take this part, no, you can cancel it. Okay, don't need to fill up. Just we can draw some lines so that it can be quadrilateral नहीं है इसमें. Okay, you can go by some straight line if we take. Red में क्यों आ रहा है? So this is the common region. So this region is common, is it? So go for apply. So this is the common region. So what are the points? Corner point. This is one corner point. This is another one. This will be A, and this is coordinates we don't know, and this is C. O A B C. But B you have to calculate by solving these two. So if you solve these two equations, simply if you solve by multiplying by 2, इसको हम यहाँ में roughly solve कर देते हैं. If you solve by roughly, if you multiply this by 2, you will have what? 6x plus 2y equal to 48. Sorry. 6x plus 2y equal to 48. Then the second equation is what? X plus 2y equal to 28. If you subtract, you will have 5x equal to 20, x equal to 4. So x equal to 4, if you subtract, put in the first equation 24, first नहीं second equation, तो you will have, तो यहाँ में हम लोग पुट करने से y equal to क्या होगा? 24 minus 12, so it will be 12. So this point is 4, 12. So the corner points you have got and the region is bounded, so now it's so simple to go for the calculation. Now, so you can write here the feasible region is bounded with corner points 0, 0, A 8, 0 था शायद, B 4, 12 and C 0 कितना था 0, 14. 0, 14. So these are the corner points. You have to calculate the value of z at each of the corner points. So as this is a bounded region, so problem ज़्यादा नहीं होगा. You can easily go for it. Four points here, so we need some space there also. So now you can form the lines. But lines, the color must be same, say green.
So first for only corner points and the value of z. Then 4 points के लिए 4 rows चाहिए. First one. Then second. Then third and fourth. काफी स्पेस है. Then this is x. So now you have to write here corner points. And there the value of z. And what is z? Z कितना था? Sorry, the next one. 10 into 2x plus y. 10 into 2x plus y. So first point 0, 0. There is 0 obviously. Second point 8, 0. Why 8, 0? Let me check the 8, 0. And 4, 12. Then 0, 14. So there it is 10 into 16 plus 0. So it is 160. Then 10 into 8 plus 12. So it's so big, 20, 200. Next, 10 into 0 plus 14, 140. So we need the maximum, so we have to see the highest value. So therefore, the highest value of z is 200 and occurs at P 412. So as the region is bounded, so what the result you have got? That is the final result. So it का मतलब हम लोग maximum profit होगा. Hence the maximum profit can be made is rupees 200. And then how many rackets and bets can be made to get this maximum profit? And that way I can write to get the maximum profit the number of rackets and bets must be made. 4 rackets, 4 tennis rackets, and 4 मतलब ये 4 12 है तो फर्स्ट x का वैल्यू है 4 तो 4 टेनिस रैकेट्स हो गया and 12 bets, 12 cricket bets must be made in a day. तो यही है. तो इसमें हम लोग को 3 आंसर एक साथ मिल जाता है. तो ये दिखाने के लिए हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं एक्चुअली लास्ट टाइम को. तो इसमें हमको सिर्फ प्रॉफिट नहीं मिलता है, इसमें हम लोग को साथ पे ये भी मिलता है कि जो पॉइंट में वो मैक्सिमम होगा वो पॉइंट से हमको एक्स एंड वाई का वैल्यू मिलता है. और एक्स एंड वाई मतलब जो हम लोग एक्स एंड वाई पहले एज्यूम करते हैं. तो पहले हम जो एज्यूम किया था, एक्स था नंबर ऑफ रैकेट्स,
एंड वाई द नंबर ऑफ बेड्स। तो इसका मतलब हम लोग को पर डे टू गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट, हाउ मेनी रैकेट्स टू बी मेड एंड हाउ मेनी बेड्स टू बी मेड to get the maximum profit, that also you can find out from the result you have got from the graph. So that is the thing. तो देखो क्वेश्चंस सेकंड पार्ट तो बाकी का जैसा ही है, तो सेकंड पार्ट हम हर कुछ में नहीं दिखाएगा क्योंकि अभी हम ऑलरेडी तुम लोग को दिखा दिया है. सो इन द रिमेनिंग क्वेश्चंस आई विल जस्ट शो यू द फर्स्ट पार्ट, दैट फॉर्मुलेशन. आफ्टर दैट यू हैव टू try the remaining part just by using graph, क्योंकि प्रैक्टिस करना होगा, then only you can know. तो इसलिए हम तुम लोग को सिर्फ फर्स्ट पार्ट को दिखाएंगे मतलब फॉर्मुलेशन पार्ट को, और जब उसमें ट्राई करो तो कुछ डाउट होने से हमसे अगेन यू कैन डिस्कस. ओके, सो लेट्स स्टॉप देयर.